Hello everyone, I am Saurabh Mishra from Toppers Academy, and today we will be learning something about stress-strain relationship, that is a class 11 syllabus, and it is a very important concept for the physics. Let's see that we are taking example of a wire, and we are giving it a rigid support. So at the free end some weight is hanged on which the weight could be added to study the behavior of the wire under different load conditions, and the extension which the wire produces is suitably measured. And after measuring the things, we are plotting a graph of stress strain, which is shown in the figure, that is 5.4. And we conclude from the figure the following observations, which are very important. Number one, we see that the line OP is like linear, and within a normal stress it is directly proportional to strain, means the strain is directly proportional to the applied stress. This constitutes the Hooke's law. And up to P, when the load is removed, the wire regains its original length along PO. कहने का मतलब है कि PO तक ऐसा हो रहा है कि जितना भी मैं लोड दे रहा हूँ वायर में, और उसके बाद जैसे ही मैं रिमूव कर रहा हूँ रोड को, तो वायर का एक्सटेंस इलास्टिसिटी जो है वो मेंटेन रह रहा है, जो कि ये कंफर्म करता है कि अप टिल पॉइंट पी it is in proportional, stress is proportional strain, which means it is Hooke's law, it is following Hooke's law. और P के बाद up to P, when the load is removed, the wire regains its original strength, and the point P represent the elastic limit. मतलब ये एक elastic region है, मतलब वहाँ तक वो अपने आप को return back to original state कर सकता है. ठीक है. उसके बाद पीओ को बोला जाता है, इस रेंज को बोला जाता है, इस लाइन को बोला जाता है इलास्टिक रेंज. और ओ बी, जो कि मैं डॉटेड लाइन से दिखाया हूँ, दैट इज कॉल्ड द इलास्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल. वो उसका उतना तक स्ट्रेंथ रहता है ताकि वो ओपी तक इलास्टिक नेचर तक रह पाए. मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, मीन्स दिस इज अ पॉइंट ओपी में मुझे ये इंडिकेट हुआ कि ये हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है, और यहाँ पर मटेरियल इलास्टिक है, मतलब लोड रिमूव करने से वो रिगेन बैक कर सकता है अपने शेप को, अपने डायमेंशन को. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट बियॉन्ड पी, अब हम उसके ऊपर जा रहे हैं और ऐसा दिख रहा है कि पी के बाद जो कर्व है लीनियर नहीं है, द कर्व इज नॉट लीनियर. In this region PQ, the material is partly elastic and partly plastic. It means it has left its elasticity. Right now it is going to a region, transformation region. Plasticity से में घुस रहा है वो elasticity से, मतलब अब वो stretch होने के बाद वो return back to original shape और original dimension में नहीं आ पा रहा, तो उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं partly elastic और partly plastic. और फ्रॉम क्यू ऐसा देखा गया कि अगर वी स्टार्ट डिक्रीजिंग द लोड, तो द ग्राफ डज नॉट कम टू ओ. क्यू के बाद अगर फिर से लोड अगर हम कम कर रहे हैं, तो वो ओ में नहीं जा रहा है, वो कुछ दूर आगे बढ़ जा रहा है. तो अगर उसे मैं एक लाइन पे रिप्रेजेंट करूँ, द ग्राफ डज नॉट कम टू ओ वाई पी बट ट्रेसेस अ स्ट्रेट लाइन क्यू ए, जो कि indicate करता है, which concludes that a permanent strain OA is produced in the wire, and this is nothing, this is called the permanent set. Permanent set का मतलब this is the position at which the material is having partly elastic and partly plastic, and this is a range in which it cannot return to position, initial position. वो अपने initial dimension में नहीं आ सकता, लेकिन वो स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है प्रोपोर्शनली वेरी करेगा, लेकिन एक वो ऑफसेट तैयार करेगा जिसको हम परमानेंट सेट बोल देते हैं. ठीक है. आफ्टर क्यू द थिंग्स गेट्स चेंज्ड. आफ्टर क्यू एडिशन ऑफ इवन अ स्मॉल लोड, अब और थोड़ा सा लोड को हम लोग जब बढ़ाते हैं, व्हाट इट विल बी डूइंग इज दैट इट विल कॉज इनॉर्मस स्ट्रेन. A small amount of stress will also cause a big strain, and thus this point Q is termed as the yield point. This QR point is a region called plastic range, and Q is the point which is called the lower yield point, and R is nothing but higher end point. Okay, so this is the plastic region in which it varies, like it is leaving it
इलास्टिसिटी, अब उसके बाद वो रिगेन बैक इट्स ओरिजिनल डायमेंशन में नहीं जा सकता. After that, after R, the wire loses its shapes and becomes thinner and thinner in diameter and ultimately breaks. R is the ultimate R is the ultimate plastic reason, or it is the reason yield point, हायर yield point, जिसके बाद से फ्रैक्चर होने का संभावना है, जो कि हम लोग बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस, एंड विच हैपेंस एट सी. सो द which happens as S, sorry, it is S. So this S is called the breaking point, and the stress corresponding to S is called the breaking stress. So the summary of this whole thing is that if we take any wire and we use any weight attached to it, so we get the assumptions of how the stress and strain happens in the wire, and this constitutes the and this gives a relationship between the stress and strain, which has been shown in this diagram. Okay guys, I hope you learned the concept clearly, and if you have any problem, you can shoot that in the class, in the live session. Thank you.